how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is subject and predicate. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about subject and predicate. A sentence has a subject and a predicate both. So a sentence has two main parts. एक sentence में दो main part होते हैं, subject and the predicate. So the subject refers to the person or thing that does the action. किससे तरफ होता है, एक person या प्रतीक जो क्या कर रहा है, action कर रहा है. The predicate refers to the verb together with the rest of the sentence. जो predicate किससे refer करता है, verb से एक साथ with the rest of the sentence से. So read the following sentences. Subject क्या है हमारा, the cat. Predicate क्या है, chased the rat. The jug क्या है हमारा, subject is full of milk. Predicate है, मतलब हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बिना अधूरा होता है. सो रजनी इज सब्जेक्ट, इज ईटिंग एन आइसक्रीम इज प्रेडिकेट. अंकल सैम इज सब्जेक्ट, सेंट मी अ गिफ्ट इज प्रेडिकेट. सो अब हम इन दोनों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंबाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा. द रेन इज द सब्जेक्ट, केम डाउन सडनली इज द प्रेडिकेट. द पिकॉक इज द सब्जेक्ट, डांस्ड बिफोर द रेन इज द प्रेडिकेट. द Ganges, the Gangas is the longest river. So, a longest river in the India, this is the subject and this is the predicate. The dog is the subject, it rolled fearlessly, the predicate. A sentence that makes a statement divide into two parts. जो एक sentence क्या होता है, statement को divide करता है दो part में, subject में and predicate में, वो sentence होता है. The predicate contains the verb. predicate में verb होती है and everything that belongs to it, जो उससे belong करता है verb से. Hence, the person or thing spoken about is called the subject. Person या फिर thing जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा subject होता है. Suppose sent me a gift, कौन, Uncle Sam. Uncle Sam क्या है, subject है. So what is said about the subject is called the predicate. और subject के बारे में जो बोला जाता है वो क्या होता है, आपका predicate होता है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation on this lesson. Thank you and have a wonderful day.